ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं
प्रभु दया है इतनी बरसी, पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया, पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं, खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं, प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं, सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया, सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अभी गीत में हम बाबा का कितना शुक्रिया करें। How many thanks we should give to Baba. बाबा हम बच्चों को आकर के कितनी प्राप्तियां कराता है, उसका अगर हम वर्णन करें तो भी कम है। जैसे बाबा के लिए कहते हैं वो गुणों का सागर है, वैसे वो प्राप्तियों का भी सागर। हम बच्चों को हर पल प्राप्ति कराता है। संगम युग है ही प्राप्तियों का युग।
प्राप्ति कराने वाला स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा हम बच्चों को अनेक बहुत ही प्रकार मी की प्राप्तियां ना के बराबर और हम सब बाबा के बेटे अपनी झोली भर रहे। तो बाबा कहते हैं कि तुम अपनी झोली तो भरते हो, Yes, सुरेश भाई के पास जाना, सुरेश भाई के पास। झोली को भर करके रखना ही रखना है, लेकिन क्या करना है, उसको यूज करना है। और जितना यूज करेंगे उतना फिर झोली भरती जाएगी, खाली नहीं होगी। ये ऐसी कमाई है, जितनी हम औरों को देते जाएंगे उतनी वो हमारे पास और भरती जाएगी। ओम शांति। जैसे बाप उपकार करते हैं, Just like the Father uplifts us. Today Baba says, just like the Father uplifts those who defame him, so we have to follow the Father in the same way. जो बाप का कर्तव्य सो बच्चों का कर्तव्य होना The activity of the Father should be the activity of the children. बाप के बच्चे कहलाने के हकदार हैं। Then only will be worthy of being called the children of the Father. जो बाबा कहता करता हम नहीं करते हैं, If we do not do whatever the Father बच्चे tells us to कहलाने के do, हकदार नहीं। so we will not be worthy of being called Father. बहुत खर 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 बहुत आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ा अभी ज्यादा ऊंचा तो बाबा जैसे कम। उपकारियों पर उपकार करता है, ऐसे तुम बच्चों को भी सदा इसी कार्य में अपने को बिजी रखना है। जो पाया है Whatever we have achieved, attained, we have to go on sharing with others. वास्तव में बाबा ने आज विशेष थोड़ी धारणा की बातें भी हम बच्चों को सुनाई कि देही अभिमानी आत्माओं की Baba today is speaking about points of inculcation, बच्चों को रोज about becoming soul conscious. बच्चे Today, every day, Baba goes on saying आत्मा समझो देही अभिमानी to consider ourselves to be souls तो देही अभिमानी and to remember Him. आत्मा के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं By being soul conscious, what would इन विशेषताओं के आधार से ही the specialities पता come चलेगा in the soul? अपने देही अभिमानी उसकी बाबा ने कई प्रकार की निशानियां सुनाई हैं। Baba has spoken about खुश रहे, many आपस में मतभेद things में नहीं that would be visible in those सदैव औरों के कल्याण की who बात, are soul conscious. जैसे बाप कल्याणकारी है Just like Baba वैसे वो भी कल्याण is the benevolent one, बाप के बच्चे so we are also कारी होंगे। the benevolent children of the Father. So today, especially, Baba is referring about निशानियां सुनाई है। being soul conscious, only of the 10th of बाबा की August. 10 अगस्त की मुरली है। मुरली का सार है मीठे बच्चे, Sweet children, जैसे बाप अपकारियों पर थोड़ा नीचे उपकार कम करते हुए, है नहीं, थोड़ा कम होगा. ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। Just as the Father uplifts those who defame Him, so you have to follow the Father को भूल in the same way. प्रश्न है Be bestowers of happiness and continue ही to अपने forget में रहने your वाले bodies. बच्चों की
Question is, what are the main signs of the children who remain soul conscious? उनका आपस में बहुत बहुत Answer is, रूहानी प्यार होगा firstly, they have a lot of spiritual या love वे कभी for one another. दूसरों की कमी Secondly, या they never कमियों को speak बयान about करेंगे। weaknesses of one another. तीसरा वे बहुत Thirdly, बहुत सुखदाई होंगे। they give a lot of happiness to others. चौथा उनकी Fourthly, खुशी कभी their गायब happiness नहीं होगी never disappears. सदा अपार खुशी में They रहेंगे। constantly stay पांचवा in limitless happiness. भेद नहीं Fifthly, आएंगे। they never come into conflict. Sixthly, हम आत्मा with the awareness of all souls being brothers, स्मृति से they are aware of having to pick up virtues. वे सबके गुण ही दिखाई देंगे। They see everyone's virtues. वे खुद भी गुणवान होंगे They are virtuous और दूसरों themselves को भी गुणवान and बनाएंगे। also make others virtuous. सात Seventh point, उन्हें एक बात they के do not सिवाय remember और anyone याद नहीं except the one Father. होगा। ओम शांति। Om Shanti. ऊंचे ते ऊंचे बाप के All of you ऊंचे children ते ऊंचे are बेहद personally बेहद sitting सम्मुख in front बच्चे। of the highest on high, the unlimited Father. तुम कितने भाग्यशाली हो। You are so fortunate. क्यों भाग्यशाली? बाबा कहता तुम कितने भाग्यशाली You हो। are so fortunate because ऐसा बाप मिला है। you have found such a Father. तुम ज्ञान सागर बाप के पास आए हो। You have come ज्ञान to the रत्न Father, में झोली the भरने ocean of knowledge, और कमाई करने। बाप तुम मीठे मीठे to बच्चों fill your aprons with इतना ऊंचा ले the जाए। jewels of knowledge and to बाप earn तुम an income. बाप तो सिर्फ तुम बच्चों को ही देखते। The तुमको Father तो किसी को is याद taking नहीं। you, sweetest children, so high. बाबा को किसको याद Father नहीं है? only देखना। sees you children. बच्चों को ही देखना He doesn't need और किसी to को याद remember ही नहीं करना। anyone. इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। This one's soul means Brahma Baba has to remember the Father. बाप को याद करना है। बाप कहते हैं Father says, दोनों तुम बच्चों को ही देखते। both of us only see you children. शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों किसको देखते हैं? बच्चों को। बच्चों के सिवाय और कोई है क्या बाबा के लिए? मुझ आत्मा को तो I, the soul, do not have साक्षी हो to देखते see everything है परंतु बाप as a के detached वर्ण में observer, भी ऐसे ही देखता हूं ना। but ब्रह्मा बाबा I also see everything शिव बाबा देखते in the same way वैसे in मैं the भी Father's साक्षी होकर company. के देखता हूं। बाप के साथ रहता तो हूं ना। I do stay उनका with the बच्चा Father, हूं do I not? तो साथ में देखता हूं। I am His child, and so I मैं see भी everything मार्ग with पर Him. घूमता हूं। Brahma Baba जैसे speaking. कि मैं ही ये करता हूं। I too around as a master of the world, ब्रह्मा बाबा क्या कहता है? as though मैं ये I am doing this. मैं दृष्टि देता हूं। I give drishti, देह सहित सब कुछ भूलना। everything, including this body, बाकी has बाप to be और forgotten. बच्चा जैसा एक हो जाते हैं। Otherwise, बाप समझाते it is as though the Father मीठे and the मीठे child बच्चे become one. खूब पुरुषार्थ Father करो। explains, sweet children, make a lot of effort. खूब पुरुषार्थ करो। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं
ऐसे just as the तुम Father uplifts बोलो फादर those करो who defame him, सुखदाई। so you children have to follow him in the same way. आपस में कभी लड़ो झगड़ो नहीं, Become bestowers of अपने को happiness. आत्मा समझ इस Never देह को fight चलते or जाओ। quarrel among सिवाय yourselves. एक बाप के और कोई भी याद Consider yourselves to be souls and continue अवस्था to को forget those bodies. बाबा कहते एक बाप के सिवाय Do not और remember कोई याद anyone न except आए। the one Father. ये भी जैसे जीते जी This is मौत की also अवस्था like the stage of death, ना, of शरीर को dying alive. एक बाबा के सिवाय दूसरा कुछ It is as नहीं, though जीते जी you have died to this world. है ना, मौत जैसे और कुछ बुद्धि वही It नहीं। is said, when you die, the world दुनिया is से dead जैसे कि मरे हुए to you. आप मरे You हुए have to die alive here. दुनिया से So continue to remove कहते the भी awareness आप of your मुझे मरे bodies. यहाँ तुमको क्या करना Sit in solitude and continue बाबा to कहते practice यहाँ this. तुमको Sit जीते in जी solitude in the morning and talk to yourself. शरीर का भान उड़ाते रहो। Remember the Father with a lot of enthusiasm. एकांत में बैठ करके Baba, अभ्यास I am now coming into your lap. क्या मैं आत्मा हूँ, Let the Father, आत्मा हूँ। let the बाबा body क्या अभ्यास end in remembrance of the One. मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। सामने जिसको भी देखा ये भी आत्मा है, फलानी आत्मा फलानी आत्मा फलानी आत्मा। ये बाबा This is known as solitude. तो बाबा कहते ये अभ्यास While you are remembering the Father, और your एकांत bodies, में that is, your skin, will be shed. सवेरे एकांत में You बैठ know अपने that साथ this साथ whole world and these whole bodies are to be finished. There is just a little time of the confluence age to make effort. ऐसे नहीं Children ask, Baba, until when उठ के खाएंगे, will this study continue? उसी में होंगे। Baba says, रहेगा बाबा until the deity kingdom is तो बाबा established. कहते बाप को उमंग से I will continue to speak knowledge, बाबा बस and you will then क्या be transferred to that new कि world. हम आपकी गोद में आया कि आया These are all bodies, एक की याद में and so they will continue शरीर to का be one or another suffering of karma. प्रैक्टिस अभी से करेंगे तो अंत समय Do पर not जाएंगे। expect Baba एक बाबा to की help याद you in this. तो बाबा ने कहा बस एक If you की become याद bankrupt में or fall शरीर का ill, अंत हो the Father will say, जाता है Bilkul, zero. क्या एकांत एकांत की अवस्था। बाप को याद If you करते become करते bankrupt or fall ill, शरीर रूपी चमड़ी the छूट Father will say, that is your karmic account. जानते हो ये However, पुरानी दुनिया yes, पुरानी with दुनिया yoga, खलास हो your जाएगी। lifespan will अभी पुरुषार्थ increase. के लिए Make भगवान effort, ने जो अभी समय दिया but है do not ask for संगम युग का ये mercy. समय थोड़ा पुरुषार्थ के लिए, The more you remember the Father, बाकी the more पुरुषार्थ के लिए benefit थोड़ा there सा is in संगम it. का ये समय है। As much as possible, पूछते हैं do everything with the power of yoga. बाबा हाँ विनाश को On the path of devotion, पढ़ाई पढ़ते रहेंगे, people sing, पुरुषार्थ hide me in your eyes. हो गए हैं, Someone तंग हो who गए is loved is referred to as पढ़ाई में the jewel of the eyes, गलती हो गई। or loved अरे more than life. आवने समय
बनेंगे क्या? This father बाबा is the most beloved, ढूंढ लेगा ना। but he is बाबा के incognito. ये समय तो कितना वैल्यूबुल है, Love कितना for कीमती him समय। प्राप्ति should be such. Don't even ask. बाबा से पूछते, बाबा कब तक पढ़ाई पढ़ेंगे? बोर हो जाते, तंग हो जाते, वो पूछते कब तक पढ़ेंगे? The father hides his children in his eyes. बोले बाबा पढ़ाता रहे। बच्चे पूछते, बाबा The eyes कब तक are not the physical eyes, but refer बाबा to the कहते हैं, intellect. The eyes किया होगा बाबा। are not the physical eyes, but refer to the बाबा कहते intellect. हैं, जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। ये पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग भी चलता रहता है, इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। This father is the most beloved, but he is incognito. Love हम बाबा को याद for him बाबा की मदद मिलेगी, should be such. मिलेगी। हाँ, हम Don't even ask. बाबा को कहे बाबा मदद कर, ऐसे थोड़ी बाबा मदद करे, जादू थोड़ी है कि लकड़ी घुमा देगा। भाई मेहनत तो हमको करनी पड़ेगी ना, बाबा को याद करना पड़ेगा। तो बाबा कहते इसमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दिवाला निकाला, बीमार हुआ, आप कहेंगे ये तुम्हारा हिसाब किताब है। बाबा मैं आपका बन गया, मेरा दिवाला क्यों निकला? The most beloved incorporeal father is teaching us. क्या कहेगा? हमारा कर्म। He is the ocean of knowledge, the ocean of happiness, and the ocean of love. अपनी मेहनत करो, कृपा नहीं मांगो, बाप को जितना याद करेंगे There must be so much love for such a most beloved father. भक्ति मार्ग में गाते, मुझे पलकों में छिपा लो, प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारा। He does so much altruistic service of the children. बहुत प्रिय है, He makes you children become like diamonds. प्रिय है, Baba is so sweet. उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए। ऋषि बाबा के साथ लव कैसा होना चाहिए? क्या उदाहरण है? कैसा लव होना चाहिए? लव कैसा होना चाहिए? जैसे वीरा का था। अच्छा, बाबा कहते ऐसा लव होना चाहिए जो बात ही मत पूछो। सुना? पूछने की बात ही नहीं रहती है। There must be so much love for such a most beloved father. अपनी पलकों में छिपाते। He does so much altruistic service of the children. He makes you children become like diamonds. ये तो बुद्धि की बात है। मोस्ट वेंकट निराकार बाप हमें पढ़ा रहे। यह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, प्यार का सागर। Baba is so sweet. ऐसे मोस्ट He is so egoless and serves you children. प्यार होना, And so you children also have to serve with so much love. बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते बाबा। तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते। You have to follow Srimad. कितना मीठा बाबा है। If you follow your own dictates, कितना निरहंकारी बन you will cross out your fortune. करते हैं। तो तुम बच्चों को भी क्या करना चाहिए? जैसे बाबा Your children निरहंकारी बनकर must have a lot of spiritual love. तुम बच्चों को
for one another. इतने प्यार से सेवा करनी चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी However, दिखाई because of being body conscious, क्या होगा? you don't have श्रीमत पर चलना, that much love जो for श्रीमत मिलेगी one उसका another. पालन करना चाहिए, You continue to find कैसी defects मिलेगी? in one another. This one is like this, that one is doing this. बाबा ने निमित्त बनाए हुए उनसे मिलती है, When you were तो बाबा कहते soul श्रीमत conscious, पर चलना, you did not find defects in anyone. अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। You had a lot of love for one another. बच्चों का आपस में बहुत You now have to imbibe that stage. Earlier, you were so sweet, ईमान में आने के कारण so now become just as sweet एक दो and constantly be bestowers of happiness. प्यार नहीं रहता उसकी निशानी By becoming body conscious, you caused sorrow, निकालते रहते, and so your spiritual happiness disappeared. कोई कमी निकालता है? हाँ, प्यार होगा तो प्यार वाले भी तो कमी छुपाएंगे, है ना? तो बाबा कहते प्यार है तो क्या करेंगे? खामियां नहीं निकालेंगे, नहीं है इसलिए निकालते रहते, Your lives have become एक दो shorter. खामियां ही निकालते रहते, फलाना ऐसा है, वह ये करता है, The Father जब has now come to make you Satopradhan and to make you into constant bestowers of happiness. यही अभिमानी में खामियां होंगी, खामियां किसमें होती है? The more you remember the Father, the more the defects will be removed. तो बाबा कहते हैं Any discrimination अभिमानी थे will किसी also खामियां finish. नहीं निकालते थे, आपस में Firmly remember, we are अब फिर brothers. अवस्था धारण By seeing yourselves, पहले by seeing yourselves as brothers, फिर ऐसे you will always see virtues. फिर अभिमान में आने से Try बुराई to make everyone virtuous. की खुशी गायब हो गई, Renounce defects छोटी हो गई, and imbibe virtues. अब आया है तुम्हें सतो प्रदान बनाकर सुखदायी बनाने, Never defame आप anyone. करेंगे Some have such defects in them ही जाएंगे, that they are unable मत to understand themselves and think आपस में themselves to be very good भेद आता है, and think themselves to be very good. But because of having defects, they say bad words somewhere or other. क्या क्या पक्का याद रहे, हम आत्मा भाई भाई, आत्मा भाई भाई को देखने से सदैव गुण दिखाई पड़ेंगे, सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो, अवगुणों को छोड़ उनको धारण करो, कभी किसी की ग्लानि नहीं होती, Such things कोई कोई ये do not happen in a Sadopradhan stage. भी नहीं समझ सकते कि मेरे अंदर ये कमी, Look at yourselves to see how sweet you have become होने के कारण and how much love you have क्या होता है, for the Father. कामी होने के कारण, कमियां होने के कारण क्या होता है, प्राण How such love for the Father that you absolutely cling to Him. पता चल जाएगा, Baba, सतो प्रधान अवस्था में you are making us so elevated and sensible. आपको देखो हम कितने
You are making us into हमारा बाप the masters of heaven. बाप से लव ऐसा हो, कोई कैसा होना, By singing the Father's prayers ऐसा लव in this way, कैसा लव होना you should bubble up inside. है। बाबा कहते ऐसा लव हो जो एकदम चिपका हुआ रहे, चटका रहे। बाबा कहते चटका रहे, चिपक जाए, जैसे बच्चा क्या करता है, माँ को चिपक जाता है। Maintain बाबा से your spiritual happiness. It is sung. There is no nourishment बाबा like that of happiness. अहंकार बनाते हो, स्वर्ग का मालिक बनाते हो। Let there be so much happiness of meeting the Father. गद होना चाहिए, रूहानी खुशी में रहना चाहिए। At the confluence age, भी हैं you children receive such nourishment that you stay constantly happy for 21 births. भगवान हमको मिला है, भगवान हमको पढ़ा रहा है, भगवान हमारी पालना कर रहा है। तो बाबा कहते क्या रहना, And there is nothing for anyone to worry about. तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए There are now so many worries, खुराक मिलती and this is why it affects people's bodies. है, खुराक मिलती है, सदा खुशी में रहने की खुराक मिलती है। फिर कोई किसी बात की चिंता ही नहीं रहती है। अभी कितनी चिंताएं, इसलिए क्या होता है, You do not have शरीर के ऊपर असर आता है। to worry about. सत्युग में चिंता ही नहीं होती, तो शरीर पर You do not have अभी तो चिंताओं से क्या anything to worry about. बीमारी आती है, इसलिए उसका असर शरीर पर आता है। तुमको Continue to serve one another with this nourishment of happiness. सब कुछ मिला। Offer this great hospitality to one another. को खिलाते रहो, एक दो की, बाबा कहता है एक दो की क्या करो, People जबरदस्त खातिरी करनी। cannot offer such hospitality to others. देखो कोई घर में मेहमान आते हैं, उनको खुश करने के लिए क्या करते हैं, You are offering खिलाते हैं ना, this hospitality on the basis of the Father's Srimad. कहते तुम बच्चे भी खुशी की खुराक To ask others about their welfare is also to give them the Father's introduction. मनुष्य मनुष्य की नहीं कर सकते। This first class, आपकी wonderful nourishment is of knowledge and yoga, थेरेपी ये है, and you only receive it का परिचय from the one spiritual surgeon, ज्ञान और योग की फर्स्ट क्लास Manmanabhav खुराक है। and Madhyajibhav. That's all. खुराक खिलाई बाबा ने, किसी को भी ज्ञान योग सिखाना These two versions are nourishment. सबसे बड़ी You receive वंडरफुल the sovereignty of the world खुराक from the most beloved Father. मिलती है। This is not a small thing. बस 2 वर्षन These two versions are very well known. पोस्ट बेलेट बाप से विश्व की With these two versions, you become ever healthy and ever wealthy. अक्षय मिलती है, You children बात है have to chant these things and remain cheerful. खर्चा करते हम सब। The praise, godly student life is the best, ये दो is वचन ही of the present time. इन 2 वचनों से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्थी बन जाए। As much as possible, वचन enable this spiritual nourishment to reach others बच्चों को and enable one another to make progress. गॉडली And do not waste your time. ये गायन भी अभी का है, जितना हो
Remember the Father with great patience, maturity, sincerity, and understanding. Remember the Father with great patience, maturity, sincerity, and understanding. समझ से बाप को याद अपनी हीरे जैसी Make your lives like a diamond. Sweet children, श्रीमत मिलती you must not be careless कौन सी श्रीमत about the Srimad मीठे बच्चे you receive from the Father. मिलती है उसमें कभी भी गफलत नहीं करनी खुशी की खुराक Give the Father's message to का संदेश everyone. को पहुंचाना है Everyone is going to receive मिलना the Father's message. मैसेज बहुत The सहज message is very easy. क्या मैसेज है Simply say, consider yourself to be a soul and remember the Father, and do not perform any bad thoughts, words, or deeds with your physical senses. One day, साइलेंस the power of your silence आवाज will be heard. दिन प्रतिदिन तुम्हारी Day by day, ऊंची जाएगी you will continue to progress, वाला हो and your name will continue to be glorified. अच्छी संस्था Everyone will understand that this is a good organization, सहज बताते that you are doing very good work, ब्राह्मणों का and that you are showing a very easy path. The tree of Brahmins will grow a lot, जाएगा and subjects बढ़ गया ना will continue झाड़ to be created. कितने बाबा के बच्चे नए 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 Many centers will open. जाएगा प्रजा बनती रहेगी Your exhibitions will take place in all the villages. प्रदर्शनी भी Your children have to do very important service. बड़ी भारी Your new centers will continue to open, in which बनते जाएंगे many people will come मनुष्य and make their lives मन हीरे like diamonds. में रहेंगे तुम्हें बहुत प्यार से You have to look after each one with a lot of love so that तुम्हें बहुत those poor people's feet do not slip. बाबा के बच्चे The more centers there are, the more people will come and take the donation of life. है ना ये ध्यान रखना हर एक को जितने जास्ती सेंटर होंगे When you children उतने जास्ती have made सेंटर an impact, जीतेंगे many will call you to go to them and teach them Raj Yoga and teach them Raj Yoga to change human beings into deities. जो सिखाओ As you make progress, there will be a lot of splendor that God Himself has come in Abu. कि वही भगवान आकर आबू में पधारे You children can see that there are many international problems in this old world at this time. जाते हैं अभी देखो All of these problems are now going to finish, इस समय पुरानी and you must not worry about any of them. डिजिटल रोले हैं Tell everyone, do not worry about them. नेशनल रोले हैं This whole world is now about to finish. अब ये सभी रोले खत्म हो Do not have any attachment to it. वो खत्म होने If you have attachment, if your heart is not clean, को सुनाओ you will not have limitless happiness. सभी रोले चल रहे लड़ाई झगड़े Your children receive plenty of treasures of the wealth of this knowledge, नहीं करो ये सब कुछ तो and so there should be plenty of happiness. अब ये पुरानी दुनिया गई The की purer your hearts are, नहीं रखना the purer अगर you will make others. हृदय शुद्ध नहीं होगा तो अपार खुशी नहीं रहेगी बच्चों
को अथाह ज्ञान Your hearts will become pure with the stage of yoga. जितना हृदय शुद्ध होगा You children यानी must also जितना have an हृदय interest शुद्ध होगा in becoming तो वो yogi का भी शुद्ध and in making others yogi. योग की स्थिति से ही If you have शरीर attachment बनता है to your bodies, वज्रों को योग if you are body conscious, then शौक होना understand that your stage is मोह है weak. ये अभिमान रहता है तो समझो हमारी अवस्था कच्ची है Soul conscious children अभिमानी become बच्चे real अच्छा डायमंड diamonds. Therefore, इसलिए जितना practice हो being सके soul conscious as much as possible. जितना हो सके यही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते. रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते. नमस्ते. अच्छा आज की मुरली से धारणा के लिए सार लेना है. Essence for inculcation. First point. Become as egoless as the Father and serve everyone with a lot of love. Follow Srimad. Do not cross out your fortune by following your own dictates. Second point. Continue to eat and serve others the nourishment of happiness that you have received from the Father. Do not waste your time. Remember the Father with a lot of patience, maturity, sincerity, and understanding, and make your life like a diamond. Blessing is, may you transform being attracted into free from being attracted and become an embodiment of power. In order to become an embodiment of power, transform being attracted into free from any attraction. If you have any attraction to your body, your relations, or any physical possessions, Maya can also come, and you will then not be able to become an embodiment of power. This is why you first have to become free from being attracted, and you will then be able to face any obstacles of Maya. Instead of screaming or being afraid when obstacles come, become powerful, and you will then become a destroyer of obstacles. Slogan is, let your mercy be altruistic and free from attachment, not filled with selfishness. Avyak signal. Finish the seed of impurity and become completely clean, means pure. पॉइंट है जीवन की आश पूर्ण होने का सुहावना समय. I am a confluence-aged Brahmin. क्या है जीवन की जो आश Before that, there is invaluable versions of Mateshwari Ji, हम सभी the auspicious time of fulfilling life's hopes. All of us souls have had a hope for a long time of having peace and happiness in our lives. So the hope that we have had for a long time will definitely be fulfilled at some point. कब तो पूर्ण होगी. This is now our final birth, and it is the end of this final birth. None of you should think that you are still young. Young and old all need happiness.
But we also need to have this knowledge of what causes us sorrow. You have now received this knowledge that due to being trapped in these five vices, the karmic bondages that we have created can only be burned in the fire of remembrance of God. उसको परमात्मा की याद The easy way to become free from our karmic bondages is to remember the Almighty Authority Baba in every breath while walking and moving. God Himself comes and helps by telling us this remedy. But each soul has to make his or her own effort. God comes in the form of the Father, Teacher, and Guru परंतु इसमें पुरुषार्थ तो and gives us our inheritance. हवा So, first of all, आएगा लेकिन पुरुषार्थ we have to belong to that Father and then study with the teacher परमात्मा and create our reward of happiness for birth after birth. This means पहले उस that we will receive our status of liberation in life according to our efforts. भविष्य In the form of the Guru, he makes us pure बनेगी and gives us liberation. जीवन मुक्ति So understand this secret and make the right effort. सार मत्वा This is the time to finish your old accounts and create a new life. However much effort you make at this time समझ ऐसा to make your soul pure, that pure effort will accordingly be recorded गुरु से and continue for the whole cycle. वह कहते हैं So the whole cycle depends on the income you earn at this time. पुराना खाता कर्म Look, उत्तम कर्म it is only at this time that we receive this knowledge of the beginning, इसी the समय middle, and the end. अपनी We have to become deities. It is now our ascending stage, and we will then go there and experience our reward. There, deities do not know that they will then fall in the future. मदार इस If they were to be aware that after their happiness they will have to fall, then by worrying about their falling, they will not be able to experience their happiness. कला है The spiritual law created is that people always make effort to ascend, that is, to earn an income for happiness. However, the path of half and half are created in the drama, and we know this secret. So, when it is the time for us to experience happiness, we have to make effort and claim that happiness. This is the speciality of making effort. It is an actor's duty भोग नहीं to act सके with all his specialities at the time of playing his part, so that the audience says, "Wah wah." This is why the deities have been given the parts of heroes and heroines. जिस राज को हम जानते Their memorial images are remembered and worshipped. पार्ट है To stay in a viceless household and to create a lotus-like stage is the specialty of the deities. तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है ये पुरुषार्थ की खूबी है एक्टर का काम है एक्ट करने समय संपूर्ण खूबी से पाठ बजाना जो देखने It was because of us forgetting this specialty that Bharat has reached the bud state it has. और पूजा जाता है निर्विकारी Now, God Himself has come अवस्था बनाना to enable us खूबी है to make our lives भूलने से like that. भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है अब फिर से ऐसी जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है
By us holding on to His hand, the boats क्या होगा? of our lives will go का हाथ across. पकड़ने से जीवन की नैया पार हो जाए। सुना? वो केवैया है, उनका हाथ पकड़ने से जीवन की नैया पार हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे। Avyak signal. Finish the seed of impurity and become completely clean means pure. I am a confluence aged Brahmin. This is not a waste thought, samskar of impurity or samskar of a Shudra. Experience the samskars of impurity and forgetfulness not to be yours, not those of a Brahmin, but those of a Shudra. ये क्या है? शूद्रपन के संस्कार। When you consider those to be yours, you become distressed or influenced by Maya. मेरे अर्थात Om Shanti. ब्राह्मणपन के नहीं, Thank you, Baba. लेकिन शूद्रपन के। उसको मेरा समझते हो तो माया के वश होकर परेशान हो जाते हो। अच्छा भाई, ये दादी जी की विशेषताएं। सत्युग के लिए पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म करें, योगी भी रहे। सत्युग में जाने के लिए अति श्रेष्ठ कर्म की लिस्ट हमारे पास है ना? अति श्रेष्ठ कर्म की लिस्ट हमारे पास। आज बाबा ने लिस्ट दी ना, आज की मुरली में कितनी लिस्ट मिली? सतयुगी देवता बनने की लिस्ट मिली। आज लिस्ट लिख लेना, लिस्ट हमारे पास है। दादी प्रैक्टिकल हमारे सामने पालना के निमित्त बने, पढ़ाई पर सबका ध्यान खिंचवाया। मुरली से इतना प्यार, मुरली कितनी बार पढ़ती और सबको सुनाती। कितनी बार पढ़ती थी दादी? लास्ट में भी दादी बैठ के मुरली पढ़ती थी, 2 घंटे तक मुरली पढ़ती। मुरली पढ़ती रहती थी। मुन्नी बहन आकर पूछती थी, दादी मुरली पूरी हो गई? तो कहती थी अभी थोड़ी बाकी। मुन्नी बहन कहती, दादी 2 घंटे से आप मुरली पढ़ रहे हो। तो क्या पढ़ती थी दादी मुरली में? ये हमने सुना। मुन्नी बहन कहती, दादी 2 घंटे से आप मुरली पढ़ रहे हो। तो क्या पढ़ती थी? पढ़ती थी वो धारण करती, एक एक शब्द को स्वरूप में लाती थी। तो कहा, दादी प्रैक्टिकल हमारे सामने पालना के निमित्त बनी, पढ़ाई पर सबका ध्यान खिंचवाया। मुरली से इतना प्यार, मुरली कितनी बार पढ़ती और सबको सुनाती। फिर बाबा के साथ पूरा कनेक्शन। जब कनेक्शन बाबा से है तो ऑटोमेटिकल लाइट बन जाते हैं और माइट अपने आप काम करती है। सेवा में सर्वशक्तिवान की शक्ति काम करती है। सर्वशक्तिवान हमारा बाबा है, कहता है मेरा काम मैं जानू, तू अपना काम कर। तुम सिर्फ सतयुगी राजाई करने के लायक, हम लायक बने। बाबा हमारे से अपना काम खुद करा देगा। बाबा वही दादी वही कहती थी, मैं तो करने वाली, कराने वाला बाबा है। करन करावन हार मेरे से करा, मैं तो इंस्ट्रूमेंट। तो हम भी बाबा के क्या है? सभी इंस्ट्रूमेंट है जो बाबा हमसे कराए। कठपुतलियां बन जाओ बस,
तो कठपुतली बन जाएंगे तो वो क्या करती कठपुतली? नाचती है? तो हम भी नाचेंगे। बाबा करा रहा है, डोरी उसको दे दो, तो नाचते रहे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। मैराथन में जो भी ज्ञान सरोवर निवासी भाइयों ने भाग लिया है और जो वॉलेंटियर्स हैं, तो सभी आज 10:30 बजे दादीज कॉटेज पहुंचेंगे और अपना टी शर्ट और मेडल जरूर पहन करके आएंगे और आदरणीय सुदेश दीदी और प्रभा दीदी सभी से मिलेंगे और ग्रुप फोटो होगा। तो 10:30 बजे तक सभी मैराथन में भाग लिए हुए वॉलेंटियर्स दादीज कॉटेज जरूर पहुंचेंगे और फिर 11 बजे सभी ज्ञान सरोवर निवासी और ट्रायल वाले भाई बहनों से आदरणीय सुदेश दीदी और प्रभा दीदी मेडिटेशन हॉल में मिलेंगे और जरूरी कुछ चर्चा करनी है। और सुदेश दीदी आज जा रहे हैं लंदन, तो छुट्टी भी लेंगे, तो जरूर सभी ज्ञान सरोवर निवासी और ट्रायल वाले भाई बहने 11 बजे मेडिटेशन हॉल में जरूर उपस्थित रहेंगे। और अभी योग के बाद जो भी भट्टी में आए हुए भाई बहने हैं और उनमें से जो भी अपना अनुभव सुनाना चाहते हैं वो बैक स्टेज पे अभी से आ जाएंगे। फिर योग के तुरंत बाद एक के बाद एक अपना अनुभव सुनाएंगे। और गराज में, ज्ञान सरोवर के गराज में जो सचिन भाई सेवारत है, उनके लौकिक पिताजी ने कल सुबह 8 बजे अपना भौतिक शरीर त्याग किया है। नटवर लाल भाई जी करीब 63 इयर्स के थे, खांडवा में रह रहे थे और उनका लिवर फेलियर हुआ था और लंग्स में भी कुछ इश्यू प्रॉब्लम हुआ था। तो सारे हेल्थ इश्यूज के कारण से उन्होंने कल सुबह 8 बजे अपना भौतिक शरीर त्याग किया और स्नेही सहयोगी रहे बाबा के यज्ञ के प्रति। तो उस आत्मा के लिए अभी योग लगाते हुए सकाश का सहयोग देंगे। ओम शांति।
जिनको भी अनुभव सुनाना तो जल्दी आ जाएंगे बैक स्टेज पे। अनुभव सुनने वाले तो बैठिए, किनको सुनाएंगे? हाँ?